Namaste from Bangkok. Hey guys, welcome to a new vlog. सिंगापुर से 2.25 घंटे की फ्लाइट पकड़ के हम आ गए हैं साउथ ईस्ट एशिया की वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग सिटी बैंकॉक में. तो आई एम फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक एंड एट द सेम टाइम थोड़ा क्राइसिस में भी फील हो रहा है, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम बैंकॉक आया था ऑल आई वांटेड टू डू वाज पार्टी एंड एंजॉय द नाइट लाइफ. बट इस बार मन है ऐसा नहीं करने का, बट कुछ डिफरेंट साइड सिटी एक्सप्लोर करने का. बहुत सारे अच्छे टेम्पल्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे अच्छे शॉपिंग डेस्टिनेशंस हैं. ऑलरेडी 6 बज गए होटल से निकलते निकलते. आई थिंक बुढ़ापा सिर पे आ गया है. डेफिनेटली नीड अ डीप टिश्यू थाई मसाज. Figure out करते हैं what would be the best place for that. But for now, let's go to the highest point in the city and take a view of the sunset from a panoramic perspective. Let's go. We are at this place called Mahanakhon SkyWalk, and it will give us access to 73rd floor, जहाँ से हम देख सकते हैं पूरी city का panoramic view, as well as a beautiful sunset. Bangkok is known for its sunsets and rooftop bar, and this place has both to offer. I tried to be your everything, gave my everything, I sold out. Now just look at me, all my goals with nothing left. Hollow, emptied out, what got lost can't be found. You stole every bit of me, now I can't remember. Ooh, who I am, what I like, what I do, what I'm like when without you. Ooh, should've known you're too good to be true. You don't come around here no more. Why'd you have to let me go? Let me go, go, go. You don't think about me no more. Why can't I just let it go? Let it go, go, go. Why'd you have to show me heaven just to leave me down in hell? You don't come around here no more. Why'd you have to let me go? Let me know, no, no. Someday I will make you answer for all of your mistakes. Hey guys, good morning and welcome to day 2 from Bangkok. So we checked into this hotel called Dangdam. Exact Khao San रोड पे है ये होटल. एंड मेरे को रात को देख के लग रहा था कि काफी शोर आएगा रूम में, पर ऐसा नहीं है. द रूम इज प्रीटी क्वाइट. सो आज का हमारा प्लान है बैंकॉक का आर्किटेक्चर एक्सप्लोर करना, जिसके लिए वी विल बी विजिटिंग लॉट ऑफ टेम्पल्स अराउंड द सिटी एंड ऑल्सो डू सम स्ट्रीट फोटोग्राफी. सो लेट्स फिनिश अप दिस कॉफी एंड गेट गोइंग. पीसफुल है काफी. इनकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा हिंदुइज्म से मिलती जुलती है. सारे किंग का नाम रामा है, और इनकी जो पहले की कैपिटल थी उसका नाम भी अयोध्या था. अयोध्या से रिलेटेड माँ का वन डे ट्रिप होता है अयोध्या.
जो टेम्पल्स आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा है एंड मतलब बैंकॉक सिर्फ बदनाम है आर्टिस्ट के लिए, है यहाँ पे भी बहुत कुछ स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड। हाँ वो यहाँ पे हर जगह है कि ड्रेस डिसेंटली, इतना ज़्यादा कंजर्वेटिव भी नहीं है बट दे आर लाइक कि यू आर इन अ टेम्पल सो अकॉर्डिंगली ड्रेस अप करो। काफ़ी अच्छा है, पीसफुल। सो टू नेक्स्ट लोकेशन। Yep, let's go. All right, let's go. So after you exit the temple, you walk towards this grand palace, which used to be the castle of Thai king, and this looked very majestic, very holy, I would say. So for our next location, we are at Wat Pho Temple. And इस टेम्पल में बहुत टाइम से आने का मन था because this is the only temple जहाँ पे the Buddha is in a reclining position. Buddha is usually in a meditative sitting position everywhere, but only here in Thailand you will find Buddha's statue in reclining position, showcasing the last days of his time on earth. So बहुत टाइम से आने का मन था. I'm feeling very good, very positive, and just make sure whenever you are coming you have enough cash available. The entry ticket is 300 baht for one person and they only take cash, no cards. So we are at Chinatown and this place really shines during the night. So I'm gonna take some photos and explore Bangkok Chinatown.